रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिस्मा और मैं एक और एपिसोड हर ओन वे के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद है जवेरिया नुमान बाबर। जवेरिया बार एट लॉ है। इनका 12 साल ऑफिशियली ये कहती है 12 साल का एक्सपीरियंस है, पर इससे ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। शी हैज अ डबल बैचलर्स इन लॉ एंड बिजनेस और इनका एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस है। और कोई लगभग कह रही है कि 12 years of experience है। She is currently heading the legal role at Gaditek. Her expertise revolves around legal drafting, vetting, research, opinion negotiation, dispute resolution, and coordination with external counsel. In professional journey, she added value to numerous projects for renowned local and global organizations, including Dalda Foods, Ghulam group of companies, Cybernet Internet, and Herbion International. She's a mother of a 9-year-old boy in grade 4, and she's a wife of a software engineer. Please, let's welcome Javeriah. Assalamu alaikum, Javeriah. कैसी हैं आप? Walaikum Assalam, Bisma. That's quite an introduction. Sounds very impressive to me personally. I was smiling जब मैंने आपका देखा कि आपने लिखा हुआ you're a mother to a 9-year-old, तो I automatically smiled और फिर आपने लिखा कि wife to a software engineer. I don't know what you were implying, but yeah, पढ़ के अच्छा लगा। ये भी एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। So कैसा चल रहा है सब जवेरिया? Alhamdulillah. Just to take from what you're saying, I feel इंसान जो भी होता है ना वो अपने support system के through होता है, तो आपको बताना चाहिए कि आपका क्या support system है. Who are the people who are rooting for you? So they should be a part of your introduction. My 9-year-old is now, mashallah, 10 years old, by the way. Okay, माशाल्लाह माशाल्लाह सही। That's great. Yes, That's yes. great. अच्छा, हस्बैंड So आपके और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है या वो भी चेंज हो गया उनका डेजिग्नेशन? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है. He's moved towards project management actually. अच्छा, okay, 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 Yes, great, great. And you yes. are you are sticking towards the legal side, right? Yes, I have been core legal for since 2010 actually. उससे पहले पढ़ाई चल रही थी different किस्म की. But I started off with a bit of litigation and then moved on to corporate work. और आजकल मैंने देखा कि दुनिया सारी टेक की तरफ जा रही है. So it's time to move towards the tech field of the world. And here I am currently playing the role of a director, legal and compliance at Gaditek and group companies along with that. Okay, okay. Yes. So how it is like? I mean, it seems very daunting task, quite overwhelming लगता है. How is it like? It's very interesting. Actually, आप अगर देखें जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी कोर तो सबकी एक ही होती है. बीट Hmm. एचआर, बीट आईटी, बीट लीगल, फाइनेंस. आप काम तो वही सब कर रहे होते हैं. It's just how you apply that knowledge to this certain set of factors and surrounding circumstances. यहाँ it's a very agile environment. I belong to a very hardcore corporate world. 9 to 5 वाला बड़ी set rules and systems के साथ जो एक पाकिस्तान में जो personal जो businesses हैं, family owned businesses हैं. Gaditek on the other hand is a very agile work environment and I'm thoroughly enjoying it. The constant I don't know where what is going to come from, वो वाली जो चीज़ है बहुत interesting है. I'm really enjoying that. Great. It sounds very interesting जिस आप बता रही हैं. जवेरिया 12 या चले officially 12 साल पहले you started your career. What were things like? How were things at that time? और legal की field as a for a female किस तरह का scenario होता था? Visma, so basically, when I say officially, it means that that's when I had done my bar and I had come back to Pakistan and decided to work full time. उससे पहले I had been doing random कुछ internships किए, कुछ jobs किए, कुछ teaching की. But the legal fraternity is where I needed to be, and that's when I joined litigation. करने का reason ये था कि I wanted to be out there in the courts. I wanted to be one of those people who'd help dispense justice, जिसे कहते हैं. लेकिन when I joined and I did litigation for about 2.5 years, it didn't turn out to be the way I needed. It's not that it wasn't my cup of tea. It was just that कि हालात बहुत different थे. अभी भी हैं. अगर आप I think जितनी भी litigation में females हैं आप उनसे पूछेंगे तो they'll all turn around and tell you कि it's a very man oriented world. Which is sad because मुझे लगता है कि बहस के अंदर औरतों को हरा नहीं सकता और litigation सारी बहस ही होती है. But having said that, I faced a lot of issues here in Karachi, especially. And that's why I decided to step aside from litigation and move towards the corporate. I never wanted to do this behind the desk, 9 to 5, subah se sham.
I'm a very people's person. I like being on the ground, doing things. लेकिन I had no choice. I feel a lot of it's sad because of course हर एक के अपने set of issues होते हैं जो लोग face करते हैं. मैंने जो सबसे ज्यादा face किया था issue वो face किया था with the fact that I was a female. B, I had come in from outside, पढ़ के आई थी बाहर से. C, I looked different. एंड डी, मुझे सिंधी नहीं आती थी. सैडली कराची का ये मसला है कि इफ यू डोंट नो सिंधी सिटी कोड्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड एवरीवेयर आई वेंट आई गॉट अ वेरी ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑफ वाइब कह लो आप उसको लोगों से. कुछ मेंटोर्स गलत मिले एट दैट टाइम. So I think it was just not the right choice, not the right set of people who were with me at that time. So I decided to move towards corporate. Alhamdulillah, corporate has been an upward climb, consistently turned out to be a good decision for me. I miss litigation till date though. Miss मैं बहुत करती हूँ उसको. सही सही. एक्चुअली आपको याद होगा एक टाइम पे बहुत क्रेज चला था वो एक सीजन का सूट्स का. हार्वी स्पेक्टर, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा. He's माय everybody's गॉड. hero. हाँ, सो दैट्स व्हाई सबको बड़ा मजा आता है उसको देखने के लिए. और फिर मैंने कहा उसको जरूर मेंशन करना चाहिए कि अभी भी पीपल्स की बड़ी फैन फॉलोइंग है एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ मेगन मार्कल. तो मैंने कहा वो भी हमें थोड़ा एलिमेंट डालना चाहिए कि लिटिगेशन का किस तरह अभी भी जो आप काम कर रही हैं एंड लिटिगेशन का जो कल्चर होता है वो कैसा होता है. बिकॉज हमें तो बड़ा मजा आता है देख के सूट बूट और वो ब्रीफ केस उठाए हुए जा रहे होते हैं और अपने अपने मुल्क में हम वो देखते हैं काले कोट. सो that's how it is. I get what you mean. I get what you mean. But I grew up एक पुराना शो होता था. If you ever have time, do watch it. Pierce Brosnan का है, Remington Steele. He was a lawyer as well. Yeah. तो उसको देखते हुए मैं बड़ी हुई थी. And Suits is like a steroid version of that show. But believe you me, it is nothing compared to what actually happens in the court, especially in Pakistan. वो जो इंडियन फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, जज साहब मैं ऐसे कर दूंगा, वो नहीं होता. जज साहब कहते हैं बेटा पूरा दरवाजा बाहर जाएगा, आपने मुझसे ऐसे बात की. हाँ, वो हमारी मूवी बट में भी तो जज साहब ऐसा था ना मोहम्मद अली का टाइम पे, आपको याद होगा. यस, उन्हीं के तो है जो लोग इस पे हमेशा वो रिकॉर्ड लिया, जज साहब. बट नो, लिटिगेशन इज अ लॉट ऑफ फन. आई टेल यू दिस, मैं आपसे जो बात करूं टेक में जैसे बहुत एजाइल है, लिटिगेशन आल्सो वेरी एजाइल. यू नीड टू बी consistently on your toes. You need to know the right people. You need to know the right lawyers. And one good case will make you up. One bad case will break you. That's how it is. You have the likes of, मतलब मैं भी एक जनरल नाम ले रही हूँ, मतलब आपके पास आबिद जुबैरी हैं, आपके पास एहतजाज एहसन है, आपके पास आसमा जहांगीर थी, आपके पास अभी भी फीमेल लॉयर्स, सम वेरी गुड फीमेल लॉयर्स इन द फील्ड. बट इफ यू लुक एट इट, अभी आपकी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम किसी फीमेल जज ने ओथ उठाया. बट इफ यू लुक एट द फील्ड, it's a very dog eat dog world, the litigation field. You have to be consistently getting good cases, the right clientele, the right cases. You're appearing in front of the right judges. A lot of lawyers are going to disagree with me when they see this video, most likely, but this is my experience, and I've realized this is also a lot of other people's experience. And ladies के लिए, like I was saying, कि आप देखेंगे आपको बहुत कम forefront में नजर आती litigation में औरतें. Even I was litigating, the person I was working with, मुझे जो cases मिल रहे थे वो क्या थे? Divorce case देख लो, custody case देख लो, family case देख लो, बहुत हो गया तो succession case देख लो, and then maybe some banking. And that's it, Hardcore criminal law is not something that you could be a part of because इतना वो सनसनी खेज, इतना वो डेंजरस होता था, इतने वो आपको पता है जो यहाँ पे हालात हैं, जो चीजें थी. And so now there were problems, and there are problems. हमारी legal system में as it is बहुत problems है, and it's not a very female friendly environment. There needs to be a lot of development in that area. बहुत लड़कियां आती हैं, बहुत लड़कियां ज्वाइन करती हैं, बहुत सारी जो होती हैं फिर वो चेम्बर वर्क की तरफ मूव कर जाती हैं या कॉर्पोरेट वर्क की तरफ मूव कर जाती है. बहुत सारी रहती है लिटिगेशन में. I know. So I mean, I'm very proud of those women who are there, who are beating it out, who are fighting it out, who are trying to make a name and make a space for themselves. But a bit time. Yeah.
इट विल टेक टाइम। बहुत सारी फील्ड्स अब इतनी अनटच नहीं रही है व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, लेकिन जो ये लीगल और कोर्ट की साइड है इसमें अभी दो आपको फीमेल्स दिखती है, बट देन ऐसा लगता है एक कैरेक्टर होना पड़ेगा आपको टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यू जस्ट कैन नॉट हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड स्टिक टू इट, बिकॉज लाइक यू सेड क्रिमिनल केसेस लेने में एक बड़ी सनसनी होती है, एक बड़ा सेंसेशन होती है। आई मीन कोई भी फील्ड सेफ नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड वुमेन आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। इसको आप कैसे देखती हैं? So I'll give you an example. When I left litigation, one of the biggest reasons for that was if you remember back in 2010, एक बहुत बड़ा bomb blast हुआ था City Court कराची के अंदर. And this is when my parents couldn't reach me. They were trying to find out where I was. They couldn't find me, and एक panic घर पे मच गया. And this was one of the biggest reasons my mother turned on and said, enough, I can't handle this anymore. I was working 18 hour days. मतलब मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलती थी, रात 10 बजे 11 बजे घर आती थी, इस तरह के सीन थे. And it was non gratifying. पैसे barely कोई थे, मतलब I kid you not, मतलब रिक्शे का किराया भी नहीं बनता था. ठीक है. एंड इस तरह वाला सीन था. एंड वो लोगों को बड़ा ऑड लगता था, बैरिस्टर साहिबा अंग्रेजी बोलती हैं और रिक्शे में बैठ के आ रही है, रिक्शे में बैठ के जा रही हैं, इस तरह की सीन होती था. बट व्हेन यू से अबाउट द फील्ड ऑफ वर्क इटसेल्फ, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये एड अप करती हैं टू द होल. बी इट फ्रॉम द फैक्ट कि आप रिक्शे में बैठ के आ रहे हैं, आप रिक्शे में बैठ के जा रहे हो, लोग आपको किन नजरों से देख रहे हैं. बी इट द फैक्ट कि आपने ब्लैक कोट साथ में थोड़ा सा मॉडर्न कुर्ता शलवार पहना हुआ, ऊपर दुपट्टा नहीं पहना हुआ. It's a white kurta shalwar. It has to be a white kurta shalwar. There's no two ways about it. And आपने चिकन का कुर्ता पहना हुआ या आपने वॉशिंग वेयर का कुर्ता पहना हुआ, you would be looked differently because you are either privileged or you are a woman who comes from a background where she already either has the right connections या इस तरह की जो एक thought process है ना, stereotyping हो जाती है. और जब वो stereotyping हो जाती है ना, फिर आप उसको change नहीं कर सकते. There was a case that I had in the city courts once, and argument चला था. एक simple सी चीज थी, मैं एक bail application argue कर रही थी, and वो मैं जज साहब मेरी बात नहीं सुन रहे थे. And I turned around and I said this to him in English only. मैंने उर्दू में नहीं उनसे बात की. मैं कही, you have to hear what I have to say. You don't want to give me the relief. That is your choice. But you cannot deny me relief without listening to what I have to say. He just simply picked up the file and he threw it on the side and he said to the bailiff, यार इनका केस अब 2 महीने बाद लगाना, बात खत्म हो गई. Just because I was standing up for what I thought was right. इस तरह की चीजें होती हैं. So ये नहीं है कि अच्छे केसेस नहीं है, अच्छा काम भी है, केसेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन I have yet to see a good female lawyer argue a case. In all honesty, I haven't been to the High Court in a while, but नहीं नजर आते आपको यही एक सर्टन सेट ऑफ लॉयर्स हैं. मुझे पंजाब का ऑनेस्टली नहीं पता क्या सीन है. आई बी वेरी ऑनेस्ट. द लीगल सिस्टम इन पंजाब एंड द लीगल सिस्टम इन कराची आर वेरी डिफरेंट. पंजाब इज मच मोर लिबरल एंड सिंध इज नॉट. एंड यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है. मुझे नहीं नजर आती फीमेल लॉयर्स. जूनियर्स होंगी, पीछे खड़ी होंगी, साथ में खड़ी होंगी, आर्ग्यू करती भी नहीं नजर आती. और जो सिर्फ नजर आती है वो आपको फैमिली कोर्ट्स के अंदर नजर आती है, बैंकिंग कोर्ट्स के नजर आती हैं. So why is that? There has to be reason for it, right? Yeah. Why can a female lawyer not be a good constitutional lawyer? Why do you not see a female lawyer leading? Why can't female lawyers all be like Asma Jahangir? Why can't they all be like जो आपकी current Supreme Court की judge हैं? They did something to be there, right? But वो one-off case क्यों है? Why was there just one Asma Jahangir and why is there just one Supreme Court female judge? We've been free since 1947. ऑलमोस्ट 80 years ऑफ फ्रीडम आपके पास है और आप कह रहे हैं कि इन 80 साल में आप सिर्फ एक औरत को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सके. Why is that? Absolutely. That's a question to be answered and thought about. Exactly, that's a question to be answered, and that's a question to be answered from females as well, I think. Why do we shy away? Why? I did it myself. I took the easy way out, and I regret it till date. If I had stuck it out, maybe it would have been a different life story for me. But हम क्यों shy away कर जाते हैं from all of this biasness or from all of this struggle? हम क्यों नहीं लड़ना चाहते? Because I don't think जवेरिया हम जब निकलते हैं ग्रेजुएट होकर, आप चले बाहर से पढ़ के आए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से पढ़ के आते तो हम काम करने की बात करना चाहते हैं ना. अब हम इतना पीछे जाके प्री रिक्विजिट पहले ये
पेव द वे करें, फिर उसके बाद हम ये करें, ये तो इसके लिए तो कोई तैयारी नहीं करता है। या तो हमारे कॉलेजों में फिर हमें तैयार करना चाहिए इन चीजों के बारे में। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट यू आई वाज हमें मैं so I was made head of the department about 3 years ago somewhere, and I said to my team कि I want to be to you what no one was to me, and they turned on and said कि मैम ऐसा क्या करेंगी आप? मैंने कहा I want to be your mentor. You know, this is something that you don't see in Pakistan. Be it for men or for women. That is, I think, a universal issue in Pakistan. हमारे कोई मेंटोर नहीं करना चाहता, कोई सिखाना नहीं चाहता कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है. How do you make way for yourself? कि आपका जो background है, her own way. How do you find that way? Who is going to tell you? Is everybody going to struggle? Or is it going to be, let's say, आज की औरतें struggle करेंगी तो अगली वालों के लिए रास्ता set कर देंगी. Absolutely. You know, that is not happening. Nobody is teaching me. I do not want to make any political comments, but जो recently abuse औरतों को आप देख रहे हैं, it's all over the media. Everybody is seeing Yes. it. Yes. Why is that happening? Why are people being forced to make decisions based on the fact कि उनकी बेटी safe नहीं है, या उनकी माँ safe नहीं है, या उनकी बहन safe नहीं है? That's not. This is not legitimate. This is not the way humans are supposed to survive. You know, it's, yes, it is survival of the fittest, but having said that, it's also survival in harmony. तो मर्द और औरत सब इकट्ठे चल सकते हैं, और it doesn't have to be a struggle. Why doesn't a woman have to? मैं जब पेशावर में थी, I lived in Peshawar for 3 years, तो मेरी फूफो वहां होती थी. वो जब बाजार जाती थी ना, तो वो ऐसे चलती थी. I don't know if you can see me or not. वो Yeah, yeah, कोनिया yeah, निकाल yeah, के yeah, चलती थी. yeah, yeah. You know, and I was like, फूफो आप ऐसे क्यों चल रही? कहती है बेटा क्योंकि मुझे आते जाते इनको कोनियां मारनी पड़ती हैं, वरना इनकी कोनियां मुझे ठुक रही होती हैं. And you know, because they'd abuse you, they'd harass you. So why does a woman have to walk like this? And this is literal and non-literal as well. Why do I need to do this in life? Why can't I walk a straight path and be successful on that path, you know? These are the questions I think we'll leave the audience to answer and ponder upon. ये बताइए, Yes. फिर आप कॉर्पोरेट में आ गई, ठीक है, कॉर्पोरेट में कैसा Yes. कल्चर रहा और किस तरह से? बिकॉज आई एम श्योर जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया होगा, इतना 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 ज्यादा लोग खवातीन नहीं होंगी लीगल के फील्ड के अंदर, या थी? कम थी, बहुत कम थी. हाँ. जो थी वो डराती थी. वो they would turn around and say कि एक खातून थी, I actually really admire her. I used to do workshops at one point in time, and she was one of my clients there at a workshop. तो उन्होंने कुछ अर्से बाद मुझे एक उससे उस वर्कशॉप अटेंड करने से पहले, सो आई इंटरव्यू विद हर फॉर द पोजीशन, इन हाउस पोजीशन, एंड उन्होंने मुझे मना कर दिया, साफ मना कर दिया, आप यहाँ नहीं चल सकेंगी. दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, एंड शी सेड यू कांट सर्वाइव. एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट? आप बहुत नाइव हैं, आप बहुत सिंपल हैं, आप बहुत सीधी लग रही हैं, आपके लिए राइट सेट नहीं है. And I was like, I'm willing to learn. So I was 24, 25 at that time. And I was like, I want to learn. I want to find out. नहीं 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 नहीं, देखिए मेरे पास बहुत काम है, मैं आपको सिखा नहीं सकती. If I have to teach you, then how will I? मैं अपनी लड़ाई कैसे लड़ूंगी? You know, how will I make sure कि मेरा काम, I stay where I need to stay. So she didn't give me the job. And then I had my workshop, and then she called me for an interview for another place. She herself called me. And she's like, I'm really sorry, I didn't realize that you had what it takes to be in a place full of men and in a room full of men and handle them, you know. And I was like, how will you find out if you don't give me a chance? आप मुझे मौका तो दें. मैं कहा, अगर आप मेरी वर्कशॉप में आई हैं, आपने मुझे देखा, instead of telling me that you can't do this, you should turn around and said to me कि जवैया आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ. Let me teach you how to, you know, make your way in the corporate world. Litigation बहुत mad dog eat dog world है, corporate ऐसा नहीं है. चलो आओ बैठते हैं, सीखते हैं, let's make it easier for the women. And she didn't. So like that's why I said I wanted to mentor. My corporate, going back to your question directly, my corporate journey has been a really interesting journey. I've had some very good people along the way. Mentors बहुत जरूरी हैं. I had one in my 12 years of life. I'll kid you not, I had just one mentor. And उनके साथ मैंने तकरीबन 3.5-4 साल काम किया. And he was a man. Surprise, surprise, he wasn't a woman. But उन्होंने मेरा, he taught me what it was like to say what is on your mind with confidence, without any fear of repercussions, and without any fear that someone will turn around and say कि तुम तो औरत हो, तुम ये नहीं कह सकती. अच्छा.
he brought me on a table of a board of directors with 9 men, and he would turn around and say, Javeriah, बताएं what you need to say, you know. And all those 9 men who have been in the world, who have been in the business world for 40 years, 60-year-old men, they would listen, they would hear me out, and they would respect what I had to say. तो अच्छा। उससे सीखा मैंने कि आप रिस्पेक्ट जो कहते हैं यू कमांड रिस्पेक्ट, नहीं, यू डोंट कमांड रिस्पेक्ट, यू अर्न रिस्पेक्ट। आप अर्न करते हैं तो आप कमांड कर सकते हैं, आप पहले अर्न करना तो सीखे ना। तो एज ए फीमेल आपके साथ वाले जो लोग हैं वो खुद ब खुद एक, एक्चुअली पाकिस्तान में कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर आप औरत हैं तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, ऑटोमेटिकली इज्जत करेगा। दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, लेट्स नॉट अब्यूज आवर पोजीशन एज वेल, आई फील कि एज अ वुमन यू आल्सो हैव टू टेल देम प्रोफेशनली कि मैं यहाँ डिजर्व करती हूँ होने के लिए, आई डिजर्व, आई एम एन इक्वल टू यू, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आई मीन इक्वल टू यू, क्योंकि मैंने भी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा जैसे आपने पढ़ा, मैंने भी उतने ही पैसे लगाए, मैंने भी उतना ही टाइम लगाया, सो लेट मी गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ, डोंट स्टीरियोटाइप। तो सो आई फॉट अलोंग, बड़े मजे के लोग भी मिले, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई, बट आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द लकी वंस, आई मेड इट दिस फार। मेहनत मैं ये नहीं कह सकती मैंने नहीं की, लेकिन I got good opportunities. I got good bosses. I got a good team of people. I was usually alone in the department. Legal usually एक या दो बंदों पे बेस करता है usually corporates में, but हमेशा हर जगह इज्जत मिली। एक जगह पे तो मैं एक जूनियर एसोसिएट थी, और जो मेरे एडमिन के बंदे थे वो कहते यार आप तो ऐसे आती है जैसे सीईओ ऑफ द कंपनी आके मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं कहा तो बात आपसे ऐसी करनी पड़ती है, आप काम नहीं करते, तो यू हैव टू assert yourself, हम्म हम्म you know. हम्म हम्म हम्म। That जवेरी, is how it is. ये बात मुझे समझ नहीं आती। जब भी मैं अक्सर खवातीन, क्योंकि ये सीरीज खवातीन को लेकर ही है, तो अब इसमें हमने थोड़ा मेल सेगमेंट्स डाले हैं, बट जब भी हम कोई खातून व्हेन शी मेड इट समवेयर, या वैसे अमूमन लोग, नॉट जस्ट फीमेल्स बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फीमेल पर्सपेक्टिव, तो वही कहते हैं वी हैव बीन लकी। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि आप लकी लकी हो गए? मतलब ये जस्ट ह्यूमिलिटी यू से कि भाई हम वी बी लकी दैट वी हैव गॉटन द राइट थिंग, दिस एंड दैट। I think we say, I'll be very honest, when I say I'm lucky, it has to do with a lot of the fact that I see people who are with me, who've done a lot better than I have, जिनकी शायद सैलरीज मुझसे अभी भी डबल होंगी, जिनकी शायद घर मुझसे भी बड़े होंगे, all of that. But then I see a lot of people who are still struggling. I see a lot of people who still मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और फील्ड्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं जब एक कॉर्पोरेट में आती हूँ मेरे साथ फाइनेंस के लोग भी हैं, कंप्लायंस के हर किस्म के लोग हैं, एंड आई लुक एट देम एंड आई लुक एट देम स्ट्रगलिंग, एंड आई सी कि वो शायद मुझसे कई ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट दे हैवंट बीन एबल टू बी देयर वेयर दे शुड बी, you know. So that is when I say that I've been lucky. And another reason is that अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलती चली गई ऐसे, अल्लाह मैंने रास्ता ऐसे बनाता चला गया कि आई एम वेयर आई एम टुडे, यू नो। सही सही। अच्छा, आपने लफ्ज आपने यूज किया दैट उस खातून ने आपको कहा दैट यू नो हाउ टू बी इन अ रूम विद फुल ऑफ मेन। इसका क्या मतलब होता है? स्पेशली आपके लीगल में क्या मतलब था इस बात का? यार ये उन्होंने तो मुझे बेसिकली कहा था वेयर आई वाज कंडक्टिंग अ वर्कशॉप, सो आई वुड डू पब्लिक वर्कशॉप्स एंड आई वुड हैव एटलीस्ट 20 to 30 पीपल इन माय रूम, एंड उसमें ज्यादातर एज आई सेड मेल अटेंडेंस होती थी। इट वाज इजी हैंडलिंग 30 फुल ग्रोन मैन, और आप उनके सामने 5 फुट की एक औरत खड़ी है या लड़की खड़ी है, और वो वो जब बोलना शुरू करते हैं सुनते नहीं है। सो a room full of men, what I realized, so even when I was a student, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स लड़के होते थे। when I got married, तो मेरे हस्बैंड के जितने मेल फ्रेंड्स हैं वो सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ज्यादातर लड़के ही हैं, बट आई हैव बीन मोर कंफर्टेबल। I've had this टैलेंट कह लो इसको, या टैलेंट तो नहीं कह सकती मैं उसको, बट एक क्वालिटी कह लो कि आई कैन मेक माई सेल्फ हर्ड व्हेन इट्स जस्ट हाँ मैन, हाँ यू हाँ नो। मैं हाँ। कर सकती हूँ, मैं उनको, इट्स नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग देम, इट्स नॉट अबाउट टेलिंग देम टू, इट कैन बी एज वेरी सिंपल एज यार मेरी बात सुनो, मैं कुछ बात कर रही हूँ, हियर मी आउट। इट कुड बी एज सिंपल एज दैट, बट आई हैव सीन गर्ल्स हु शाई अवे फ्रॉम दैट, फ्रेंड्स, फैमिली में, room full of men, they wouldn't want to go inside because they'd be like, I'm not comfortable.
and they would have their backgrounds to it and they would have their reasons for it. But background तो मेरा भी है, history मेरी भी है, सब चीजें हैं, but you have to get over it and move on in हाँ life. हाँ हाँ, आई गेट वरना दैट। लोग तो आपको फिर बुली करते रहेंगे सारी जिंदगी। हाँ हाँ, बिकॉज यू सेड एक स्टेटमेंट आपने दिया था शुरू में कि मुझे सिंधी नहीं आती थी। सो अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि हम तो ये कहते हैं ना कि रंग थोड़ा गोरा हो, अंग्रेजी बोलनी आती हो तो फिर काम हो जाता है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड ऑफ जो हम जिससे जो बेचारे जिनके रंग साफ यस, नहीं होते और अंग्रेजी का एक्सेंट नहीं होते। तो ये क्या चक्कर था, जरा ये बताएं। यू हैड टू फेस रिवर्स यार वो ये डिस्क्रिमिनेशन। कल्चर है कि सिंध में काम करने के लिए ना आपको सिंधी आनी बड़ी जरूरी है, बिकॉज इफ यू डीलिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हियर, इफ यू डीलिंग विद द ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हियर, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा सारे सब सिंधी स्पीकिंग होते हैं। एंड ये वो आप ऑटोमेटिकली, जैसे आपको पता है पश्तो स्पीकिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली लिंक कर जाता है, कनेक्ट कर जाता है। इसी तरह सिंधी का भी है। सो अगर मैं कोर्ट जाऊंगी, ज्यादातर वकील वहां पे सिंधी स्पीकिंग होते हैं, ज्यादातर जजेस जो होते हैं सिटी कोर्ट में खासतौर पे सिंधी स्पीकिंग होते हैं। तो एंड दे प्रेफर, हालांकि आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश या उर्दू है, लेकिन दे प्रेफर, बहुत दफा कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग्स भी सिंधी में चल रही होती है, बिकॉज वकील भी सिंधी बोल रहा है, क्लाइंट भी सिंधी है, जज भी सिंधी है, तो वो सब सिंधी में बात शुरू हो जाती है। तो यू फील लाइक कंप्लीट सोर थंब स्टैंडिंग आउट कि आपको तो सिंधी आती नहीं है, अब आप क्या करें। तो सैडली मैंने सीखने की कोशिश भी नहीं की, मुझे सीख लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। अब मैं ये जरूर करती हूँ कि मेरी टीम में कोई ना कोई सिंधी स्पीकिंग बंदा जरूर होता है जो मेरे सारे ये वाले काम कर देता है। चलिए, गुड गुड, क्या उस तरह से Yeah. डाइवर्सिटी आ रही है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इस तरह Yes. से। अच्छा, तो ये चीज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी आपको से फेस करनी पड़ी एक तरह Yes, से। yes, yes. अच्छा, अब ये बताइए जवेरिया, व्हाट इज नेक्स्ट? आपने बताया कॉर्पोरेट में तो यू हैव बीन क्लाइंबिंग द लैडर। यहाँ पे आपको कोई चैलेंजेस नहीं मिले, या आपको ये वाज दिस रोड वेरी स्मूथ? So I think the biggest challenge that I've had here is the environment, in the sense that this was also a concern of the people who are hiring me. कि आप आ रही हैं from a very, like I said, from a very set corporate background, जहाँ पे एक certain agendas हैं वो pursue होते रहते हैं. We are a startup culture. They're not a startup. They've been in the market since 2007, but they're a startup culture. Young leadership है. All of the leadership is younger than I am. So बड़े अब, and but they're visionaries as well. So I think this was their key concern. Do you think that you'll fit in? And I desperately wanted to fit in because this was something that's the future. This is what it's going to be. And I said I will. So when I got here, मुझे थोड़ा आपके लिए 2 महीने लगे थे to find my footing. ऑफिस आओ तो कभी when you leave here at 6 in the evening, तो यहाँ पे दिन का समय होता है, बिकॉज आपके क्लाइंट सारे बाहर के हैं। तो ये आपके सारी तो लोग बेसिकली द एक्चुअल वर्क हैपेंस बिटवीन 2 and 8, यू नो। सो जब मैं जा रही होती हूँ तो बहुत से लोगों के साथ ऑफिस आ रहे होते हैं, तो बहुत इस तरह की चीजें हैं जिनको मैं अच्छा। इट टुक सम टाइम. You'll find, and it's actually very nice place. You'll find people, a group of 5 people sitting together on the floor working on their laptops. बुक क्लब चल रहा है साथ में कोई आउटडोर मीटिंग हो रही है वो पैटियो में, इस तरह की चीजें। तो मुझे बड़ा ऑड लगा था। इट वाज नाइस बट इट वाज ऑड बिकॉज ऐसे यार कोई डेकोरम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाँ। Where is the big board table? Where are the slides? Where's the presentation? How is this working? You know? Yeah, I know, I know. So, but it's been interesting. It's been अच्छा। good, and not because I'm working for them. That's not the reason. But I've had the people that I'm working with. They're good people. They're हम्म, generally the sort of people who respect each other. It's not just about females. They respect हम्म, each other. Mutual respect है. हम्म। तो उसकी वजह से एक बड़ी ओवरऑल अच्छी इन्वायरमेंट है। वेरी गुड। और जेन जी को कैसे हैंडल किया आपने? हाय, ये अभी ऑनगोइंग चीज है। सो उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि एक्चुअली आई एम द एल्डेस्ट ऑफ 5 sisters, अच्छा। एंड आई वाज बोर्न इन 82, और जो मेरी सबसे छोटी वाली है शी वाज बोर्न इन 96। तो अच्छा। शी इज जेन ज़ी, है ना, शी इज अच्छा, गॉट दैट। ओके। अच्छा, तो ओके। उसको जिस तरह से हैंडल करना पड़ता है इसी तरह मैं तो हैंडल कर रही हूँ लोगों को, उनको करने का और कोई तरीका नहीं है। नहीं, आई थिंक इसमें भी वर्कशॉप होनी चाहिए, हाउ टू लुक आफ्टर, हाउ टू बी विद जेन जी। आई It's थिंक a आजकल different का world. It's like हाँ। you're looking into a complete, वो Alice in Wonderland वाली चीज होती है ना, वो वाला सीन है। अच्छा, नाइस। नाइस। अच्छा, जवेरिया, मुझे लीगल एस्पेक्ट से भी बताएं और अपनी भी पर्सपेक्टिव बताएं। आपके लिए ये क्या है, इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है,
एम्पावरमेंट क्या है? Because I'll go with the legal aspect of this first. If you go back into the history of law, equity was introduced as a field of law by the British. It was actually introduced. एक पूरी field बनी थी equity and trust की. ठीक है? Equity and trust क्या है? Equity is making sure that whatever is being done is done with complete fairness. ठीक है? Fairness. Equity is fairness. It's not justice. It's not equality. It is what is right. That is what is equity. और इसकी basis के ऊपर it initially started off with simple things like the distribution of land and the distribution of wealth, the distribution of division of a man's assets once he passed away. But over time, equity also then became a way of everything. आप जो एक प्रेसिडेंट सेट होता गया कोर्ट्स के अंदर, जजमेंट्स के अंदर, उसके अंदर कि एक फीलिंग ऑफ फेयरनेस ऐड होती चली गई, यू नो. एंड दिस वाज वेरी नेसेसरी, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ बड़ा ब्लैक एंड वाइट है, यू नो. बट उस ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत कुछ ग्रे भी है, और वो जो ग्रे है ना उसको इक्विटी कवर करता है. एंड पाकिस्तान में देयर इज, I'll be very honest, there's still a long way to go to find that gray, to find balance the black and white with the gray. लेकिन इन प्रोफेशनल वर्ल्ड, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर मैंने देखा है कि इसका एसेंस बढ़ता जा रहा है. जनरली मुझे नजर आता है कि बढ़ता जा रहा है. इट्स वो टाइम शायद अभी थोड़े पीछे चले गए हैं जब इट वाज ऑल अबाउट a man will make sure that a man will go ahead, or again, not to make any controversial statements, but जैसे एक जमाने में होता था कि अगर आप दुबई चले जाएं तो एक सर्टन नेशनैलिटी का बंदा सिर्फ अपनी नेशनैलिटी के लोगों को आके लेके आता है, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं. दैट यूज्ड टू बी द नॉर्म इन पाकिस्तान एज वेल, बट दैट्स चेंजिंग. मेरिट, मेरिट भी तो इक्विटी है ना. जी. What is merit? You prove that you are worth a certain designation, or you prove that you're worth a certain appraisal, or a certain car, or a certain perk. तो मेरिट के ऊपर जो लोग आगे आना शुरू हो रहे हैं उसको ग्रो कर रहे हैं. एंड इसीलिए अब आप देखेंगे कि आपको ओवरऑल हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट में औरतें ज्यादा नजर आनी शुरू हो गई हैं जो पहले नहीं थी. ये फैक्ट है कि औरतें ज्यादा केपेबल हैं, औरतें ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और औरतें ज्यादा कमिटेड हैं, you know. Because, and I'll tell you the reason for that commitment also. The reason for that commitment is because औरत को ये पता है कि, and it's true, कि अगर मैं आज इस जॉब से चली गई तो it will not be easy for me to find another job tomorrow. I will have to struggle to find that job. So she makes sure that the job that she has, she clings on to it, and she makes sure that she keeps herself evolving with that role. Unless otherwise she'll be outdated, you know. तो equity अब मुझे ये नजर आनी शुरू हुई है in time कि मैं, so I took a break in between my career and I came back and I had to restart from the entry level. But in 7 years from the entry level position to being the head of the department for the past 3 years, क्या है ये equity तो है कि anyone could have turned around and said कि ओ आपकी तो सीवी में इतना बड़ा गैप है, आप कैसे काम कर रही हैं, आपको तो हम नहीं अलाउ कर सकते. बट देखा कुछ मेरिट नजर आया, कुछ फेयरनेस, उन्होंने फेयरली डील किया, तो आया मेरा यार, यू नो. आप अगर सिर्फ पेपर पे जो फैक्ट्स हैं या जो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स हैं उनको देख के जिंदगी लेके चलेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे. सो फॉर मी दिस इज इक्विटी, allowing people chance to prove themselves. I'm worth the value that you want to give me, and I'm worth actually worth more than that, you know. ओके. और आपके Yeah. लिए ये एम्पावरमेंट क्या है? I think they go hand in hand. It's the same thing. For me, empowerment is exactly the same thing. Being able to, being given the chance. कोई उंगली पकड़ के मेरी मुझे चलाने के बजाय कोई मुझसे कहे कि ये तुम्हें दे दिया गया है, this is your kingdom, rule it, you know. That kingdom could be 2 people in a team, or that kingdom could be a cabinet full of files, but whatever it is, you know, letting me do what I want to do, which I think is the right way to do it. If I don't prove myself worthy enough, you have every right to let me go. Or you have every right to tell me that you're not performing, or you have every right to tell me that there are gaps. But give me a chance.
आप जब चांस ही नहीं देंगे तो फिर कैसे पता लगेगा? सही सही आपने मैं चाहूंगी कि आप अपना जो मैसेज दें उसमें जरूर इस बात को इनकॉर्पोरेट करें जो आपने शुरू में एक स्टेटमेंट दिया था कि फाइंडिंग योर वॉइस या आई नो हाउ टू मेक माई सेल्फ हर्ड। इस पे जरूर हमारी खवातीन को जरूर एक मैसेज दें। um so what I've realized is that खामोश रहना बहुत आसान है. It's very easy to just sit on the sides and watch the action happening. It's also very easy to यार खामोशी से कहना कि यार ये सही नहीं हो रहा है, यार ये भी हो सकता था. If you feel that something needs to be changed, you either make the change happen or you make sure that you initiate the change. You get the ball rolling. Talk to the right people. Make yourself visible. अपने सोच को visible करें in front of the people who are going to help you achieve a goal. That goal could simply be, मैं honestly बता रही हूँ, for a female perspective की मैं बात कर रही हूँ, that goal could simply be deciding which school your kids go to. And that goal could simply be deciding how many hours you want to work in a day at the office. That goal could be deciding whether you want to take your full maternity leave or not, or if you feel that you need a full year's maternity leave. You know, these are choices that you get to make, but you need to. मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि जब तक तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि हाँ या ना है. मैक्सिमम ना हो जाएगी ना. The worst thing that's going to happen is somebody is going to turn around and say to you no. But say it, make yourself heard, and then see what the reaction is, and then deal with the reaction. But stand by what you say, stand by what you believe in, and बाकी मेहनत करते रहे, कोनिया निकाल के चलते रहे. वही वाली बात है. सही। जवेरी यहाँ से अब क्या व्हाट नेक्स्ट आपकी लाइफ में अब क्या है आगे आप क्या क्या आपकी प्लानिंग है फ्यूचर। Uh, अच्छा सवाल है. अभी तो I plan to stick around where I am for a while. I'm really enjoying this, and I think this is going to change the direction of my career for a while. I have never wanted to have my own law firm, वो वाली चीज नहीं है, but so I'm 40, 20 साल रह गए जिंदगी के जो corporate world के होते हैं. I think I'm going to continue doing what I am doing. I want to consult. I want to हम्म consult. I want to add value. I want to mentor. So this is something I हम्म, want to do. मैंने TCF का mentoring program भी किया हुआ है एक जमाने जी में. जी। So maybe one day आपका जो program है that can help me with this as well. I want to help people grow. You know, that's what I want to do. And that is something एब्सोल्युटली। that I'm going to look into doing practically maybe in 2 to 3 years, inshallah. इंशाल्लाह ताला आप एक्चुअली अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ये सवाल कहने की कि फीमेल्स को मेंटरिंग की कितनी जरूरत होती है आपको कितनी जरूरत पड़ी बिकॉज सारी कोर गुफ्तगू हमारे में गुफ्तगू में ये बात शामिल थी कि मेंटर्स की कितनी जरूरत होती है। आपको 12 साल में एक ही मेंटर मिला बट आपको और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए थी फीमेल मेंटर्स होने चाहिए थे एंड यू आर सो मच अप फॉर मेंटरिंग एंड आई होप इफ पीपल एनीवन रीच आउट टू us we will definitely look forward to sharing their profile या उनका जो भी आप हेल्प कर सके we'll share that with you and thank you so much जवेरिया। पता नहीं लगा कि इतना मजे एक लीगल के साथ ही ना ये भी एक वो है बायस है कि हमारी गुफ्तगू शायद बोरिंग होती लेकिन इतनी अमेजिंग थी इतनी मजे की थी एंड इट ऑलवेज अ टू वे थिंग। सो बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड इट वाज रियली आई रियली एंजॉयड इट अर्ली इन द मॉर्निंग। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much, Bisma. No, it was wonderful talking to you as well. And I would like to continue this relationship with you and your team. You guys are doing something to make the world a better place, and why not be a part of it instead of sitting on the bylines? I'd like to be a part of it as well, and I think this is a small step towards that. And I wish you guys luck, lots of luck, you know. बहुत And शुक्रिया। bas, thank you very much for this opportunity. I'm here for whatever help that I can be. And if you need any legal advice as well, I'm around. थैंक यू सो मच जवेरिया बहुत शुक्रिया। इट वाज रियल फन टॉकिंग टू यू एंड आई होप हमारी ऑडियंस भी इससे बहुत हासिल करे सीखे कुछ और ये बस एक छोटी सी एफर्ट है जस्ट टू गेट द बॉल रोलिंग कि भाई जो चैलेंजेस आते हैं जरा उनको डिस्कस कर ले। इतना मुश्किल मतलब लोग समझते हैं ना कि when we see people like you smiling तो हमको लगता है कि भाई ये तो
वो somehow उस जो आपकी struggle होती है, वो जो glitz glam होता है, उसमें confuse कर देते हैं. But then they also need to know the real picture and they need to know कि उनको prepare करना है, अगर उनको आना है या कुछ करना है, या even इस जगह पे पहुंचना है जहां पर आप हैं. If not city courts, but even if a legal counsel, तो उसमें भी there has its hard work and it's hard work in this direction जो आपने उनको थोड़ा बहुत guide किया. So I'm sure it's going to be helpful for people out there. Thank you so much for all the nice and kind words, and I also wish you all the best.